record, and that's probably triggering him even more, but I am recording for my safety because he has been aggressive, right? Absolutely nothing done from my end, and that was complete aggression. He goes रोड रेज इंडिया में काफी कॉमनली देखी जा रही है। हर दूसरा बंदा कहीं ना कहीं रोड रेज में इन्वॉल्व होते हुए नजर आता है। पिछली कई सारे लोग दूसरे स्टेट से आए लोगों को परेशान करते देखे गए और बेंगलुरु में ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है रिसेंटली। एक काफी शॉकिंग रोड रेज का इंसिडेंस वापस बेंगलुरु से सामने है, जहां खुद की गलती होने के बावजूद एक लोकल बंदे ने रोड रेज में कार की विंडशील्ड तोड़ दी। ये वीडियो मिस्टर बर्नार्ड मैस्करेनेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था, जहां उन्होंने बताया कि यहाँ स्कूटर में चल रहे लोकल बंदे ने उनकी गाड़ी की विंडशील्ड हाथ से तोड़ दी। ये पूरा इंसिडेंस मिस्टर मैस्करेनेस ने अपने फोन पर भी रिकॉर्ड कर लिया। एज पर डिटेल्स ये इंसिडेंस बेंगलुरु कल्याण नगर का है, जहां मिस्टर मैस्करेनेस बिजी रोड में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तभी एक स्कूटर राइडर रॉन्ग साइड से आया और अचानक से उनकी कार के आगे कट भी मारा। समहाउ उन्होंने ब्रेक मारते हुए एक्सीडेंट होने से बचा लिया। हालांकि यहाँ स्कूटर राइडर ने पहले आई कांटेक्ट बनाया और फिर गाड़ी की नंबर प्लेट को, जिसमें महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर था, और महाराष्ट्र रजिस्टर्ड नंबर देखने के बाद वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और मिस्टर मैस्करेनेस ने खतरे को जांचते हुए अपना फोन का कैमरा ऑन कर लिया, जिसके बाद सीधे कार के बगल में आकर उन्हें यहाँ वो थ्रेटन करने लगा और गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे, इसीलिए यहाँ स्कूटर राइडर गाड़ी के अंदर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बाद में बोनट लिफ्ट करने की कोशिश करने लगा पर बोनट लॉक था और फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर उसने गाड़ी की विंडशील्ड हाथ से तोड़ डाली। About 15 hours back, I uploaded a couple of stories on my Instagram, wherein a guy came, smashed my windshield, and ran away from the spot. Well, I immediately filed an FIR, went directly to the police station, filed an FIR, gave the inspectors all the details, and came back home. It took about 3 hours. Family was worried. It was quite late. I was returning back from office, so had dinner and tried to sleep over it. I got a lot of messages thanks to DV, thanks to AJ, thanks to people from across India who've seen that, and a lot of helpful information on whom to contact, whom to tag to get additional information. Well, I just want to explain what exactly happened because the video starts in between. And to start off with, here's the damage in daylight. It's pretty difficult to drive. Small shards of glass which have come inside as well. This happened 200 meters away from the Hormao bridge. So I was stuck in traffic on the last U-turn just over there when an XUV in front of me moved ahead. I also moved ahead. That was going on pretty much for the last 10 minutes or so because the traffic was heavy in that stretch. And the opposite lane, of course, because it's only 200 meters away from the signal, the opposite lane is empty, right? As I moved ahead, a Dio from the opposite side came in and the U-turn cut on the divider was just beside me. Tried to cut in front of me to take a turn which was on the other side. For me, it would have been a left. For him, it would have been a right. So he came from that side and tried to just ride across. Traffic had just opened up. Me, the cars beside me, we all were accelerating. I had to brake hard, but did not touch him. Stopped within well distance. Clearly evident because he gets off from the left side of his scooter. That implies that he's got enough of space. So I stopped immediately and I looked at him. He looked at me. There was eye contact. Then he looked downwards towards where my number plate is and then got off from his scooter aggressively. It happened like this. Okay, nothing else in between. Happened in a fraction of a second, and I saw his body language. And his body language, when the way he got off from his scooter, I pulled out my phone immediately. The moment he saw the phone in my hand, he started coming towards my window, which was here. And by the time I managed to, swipe and open the camera and start recording, you've seen what's happened on the recording since then. The noise coming from outside was not a lot because all the windows were up. You could see that he's hurling some abuses. What they were, I don't know. Although I do understand a bit of Kannada. Then he tries to lift up the car. No, I'm continuing to record and that's probably triggering him even more. But I am recording for my safety because he has been aggressive, right? Absolutely nothing done from my end, and that was complete aggression. He goes back to his scooter, flashes the finger and rides off. What triggered him, what I observed was he looked at the number plate and then started the aggressive set of movements. Prior to that, there was only eye contact. So
I am not trying to start a Karnataka-Maharashtra war, nothing like that. So my video here is only to explain what happened and give the complete picture so that this is on records over here. फाइनली रोड रेज करने के बाद और बाकियों को ट्रैफिक में फंसाने के बाद, गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद, बिना हेलमेट पहने ये एनिमल यहाँ से स्कूटर में बैठ के निकल गया। मिस्टर मैस्केंस ने यहाँ स्कूटर की नंबर प्लेट नोट कर ली थी और सबूत के लिए ये वीडियो तो अवेलेबल था ही, और सबसे पहले उन्होंने यहाँ एफआईआर करवाई। अब बेंगलुरु पुलिस भी यहाँ जल्द एक्शन लेगी और इस एनिमल को 2 डंडे मारकर इंसान बनाने की कोशिश जरूर करेगी। पर यह बहुत कॉमन हो रहा है और ऐसे इंसिडेंट्स को इमीडिएटली शेयर करना और साथ में रिकॉर्ड करना फ़ोन या डैश कैम में ज़रूरी हो जाता है, ताकि इन्हें सज़ा मिल सके। और सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोग को बाहर वाला समझकर वहाँ के लोकल लोग किसी भी स्टेट में दादागिरी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें और अपनी गलती हो तो ज़रूर माने। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोग अवेयर हो सके और पुलिस भी यहाँ जल्द से जल्द एक्शन ले। साथ में आप ट्विटर में भी इसको रीट्वीट ज़रूर करें। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।